So So the first question is about, it has given you the molarity and it is asking what will be the volume of O2 gas released on decomposition of this much H2O2. Now we know that volume strength का last time हम लोगों ने formula पढ़ा था, the volume strength was molarity into 11.2 यही पढ़ा था ना. So that means this will have volume strength is equal to 1.5 into 11.2 and that will give you 16.8. Is it okay? इसको we'll call it 16.8 V. ऐसा लिखते हैं. Will this be the answer? Why? No. Why? The volume strength is the amount of oxygen gas released per like for 1 liter. Here is asking for 10 milliliter. The definition of volume strength was a given solution with its 1 liter volume will produce how many liter of O2. That was the basic definition of volume strength. That means if I am having 1 liter volume of this solution, I can produce 16.8 liter of O2 gas measured at NT. But if I am having 10 ml only, that will produce 10 times 16.8 ml O2 on decomposition measured at NTP. Is it okay? And that's why the answer will be D. Is it okay? so 16.8 liters per liter of given solution. 16.8 liter O2 gas measured at NTP per liter of given solution. Okay. That is the meaning of volume strength. So that means whatever volume of solution you have taken, uska 16.8 times will be the O2 gas released at NTP on complete decomposition. And that's why 10 ml ka 10 into 16.8 times. Okay? 10 by 1000. Okay. Yeah. Now, basically that was first question. Second, now we have come to the iska reaction wise how to apply this theory. So if you see second question, I have given you 10 ml solution of H2O2 and it is requiring this thing in presence of acid. That means it gives you a particular value of N factor. Geet, can you tell me the N factor of KMnO4 in acidic medium? If I'm talking about redox reaction. What is the N factor of KMnO4? So 5. Why 5? So it goes from +7 to +2. Okay, so Mn2 plus will be the final product and that's why it is going from +7 to +2 and that's why per Mn changes of 5 and it is having just 1 Mn. Clear है सबको? H2O2 का N factor Chris बता. H2O2 का N factor. बताओ H2O2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. We don't know the theory of H2O2. कैसे काम चलेगा? राघव बोल. 1 into 2. Why 2? Because 2 atoms now of oxygen. Matlab oxygen goes from oxygen atom change was of 1 and there are 2 oxygen atoms and that's why I told you that. I'm reminding you again. अब पीछे ही दिखेगा. If you go back slightly, if you go back now, you'll get all these things है ना. सारा डिटेल यहाँ देखो लिखा हुआ है. So ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, the change in oxidation state per atom of O will be of 1. H2O2 is having 2 oxygen atoms and that's why total change will be 2. So as oxidizing agent or as reducing agent, its N factor is 2. When we are talking about complete decomposition or disproportionation of H2O2, it will have N factor of 1. But जैसे रिएक्शन में चले गए, if I am having a reaction of H2O2 with anything in redox reaction, we'll say H2O2 का N factor is 2. Now it says what is the strength of H2. पहले तो मोलरिटी की बात कर लेते हैं. तो मान लो मोलरिटी इज X. मान लो X is मोलरिटी, बाद में स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे. मोलरिटी. Then we'll say X into 10 upon 1000 into 2. That will be the gram equivalents of H2. Molarity into volume in liter into N factor. And that will be equal to gram equivalents of KMnO4.
that is 1 by 50. If they have written m by 50 solution, that means molarity is 1 by 50 into 25 by 1000 into iska n factor, that is 5. And if you solve it, you are getting x equals, if you see, this is 2, 5 by 2, 5 by 4, 5 by 40, 1 by 8 जैसा कुछ आ रहा है, 0.125 आ रहा है क्या? Yes, sir. 2.5, 2.5, हाँ ठीक है. So this is 1 by 8 आ रहा है. This is molarity. And molarity means these many moles are present in 1 liter. If these many moles are present, so we'll say 1 by 8 into 34 gram is the molar mass of H2O. So these many gram per liter will be present. So that gives you 4.25. Is it okay? Clear है सबको? तो मैं थोड़ा डिफरेंट वैसे किया. बोलो. मैंने पहले तो मोलारिटी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया into 2 into 5.6, I mean 11 into 11.2. फिर आपने वो एक फॉर्मूला दिया था ना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ into 0.303. Okay. So we had discussed all these terms, है ना? ये सारे कन्वर्जन मैंने पढ़े थे और इसी में बोला था कि आप just I can write that also. If they are talking about a third term called strength in per gram per liter, that is nothing but 10 times of percentage weight by volume. Because percentage weight by volume says how many grams are present per 100 ml. This is asking you how many grams are present per liter. That is 10 times of percentage weight by volume. And that's why it will be volume strength into, देखो ना 30.3 times हो जाएगा ना. This will be 30.3 times into volume strength. तो वहां से भी कर सकते थे. इफ यू हैव गॉट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वहां से फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कर लो या फिर 30.3 टाइम्स कर लो. ओके सॉरी, हाँ ठीक है. ओके नेक्स्ट वन, थर्ड वन. We are just mixing two solutions. When we are mixing two solutions without any reactions, moles of solute will get added, volume will get added. And this was the definition. So that means moles को add करना. If there is no reaction, so we can directly add the gram equivalents also. है ना? So we can directly write. It will have final normality will be 10 into 1.5, that is milli equivalents of first H2O2 solution का H2O2, 10 into 2.5 upon 10 plus 10, and that is 2 आ जाएगा. And after getting that, volume strength will be 5.6 times of it. 2 into 5.6, that is 11.2. Okay, that's third question. Fourth question. Now अब हम लोग थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं वहाँ जहाँ पे we need to be very cautious कि हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट्स समझ में आना चाहिए, n फैक्टर समझ में आने चाहिए. If you see this question, this one, it says you are having some K2Cr2O2 K2Cr2O7 का solution which was diluted to 200 ml. 20 ml का 200 ml किया. What will change, what will not change? Moles will stay constant, volume will change. Extremely excellent. So we have made the volume 10 times. So concentration will become 1/10. है ना? So that's why it's saying कि concentration को 1/10 कर दिया and then उसका 1/8 of the sample is taken. है ना? 25 ml लेने का मतलब क्या? 1/8 of the sample has been taken. If 1/8 of a sample has been taken, then moles will also be coming 1/8 only, है ना, of the initial. And that's why initially जितना भी moles या millimoles था उसका 1/8 लेकर तुम चल रहे हो. Now it is being mixed with 50 ml of 4MH2O2 SO4 solution and 30 ml of this mixture is diluted to 150 ml. ये पूरा खेल तुमको रिवीजन के लिए मौका दे रहा है of the mole concept in which concentration terms जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें we see the application of molarity like dilution, mixing of solutions, है ना, taking sample of a solution from a solution, है ना, all these things, mixing of solution when they are reacting, mixing of solution when they are not reacting,
ये सारी चीजें दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि एक बार जाके मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म में रिवाइज करूंगी. आई गिव यू द ब्रीफ, जानबूझकर मैंने दिया था ताकि इसी बहाने आई विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन. सो इसकी बात कर लेते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, इनिशियल सॉल्यूशन जो था इट वाज हैविंग 1m K2Cr2O7 solution and the volume is 20m. Now, if I am doing that dilution, we are doing the dilution, and dilution may we know that moles will not change, na? Is it okay? So this was having 1 into 20 millimoles. तो ज्यादा confusion हो तो millimoles में काम करना start कर दो and carry it. If you are doing the dilution, there is no effect on that. If you are taking a sample, definitely it will have some effect. So that's why it was having 20 millimole. So this time it will have 20 millimoles in 200 ml. Is it okay? So now there are two ways. एक तरीका ये था कि मैंने मिलीमोल्स को कैरी कर लिया, या फिर दूसरा एक तरीका हो सकता था, इफ आई मेड द वॉल्यूम 10 टाइम्स कंसंट्रेशन विल बिकम 1/10. तो 1m का 0.1m हो जाएगा, वो यहाँ भी दिख रहा है. दिस मीन्स यू आर हैविंग 0.1m सॉल्यूशन. 20 by 200 is also 0.1. Now we are taking 25 ml sample. What will not change? Concentration. Concentration will not change, na? So that's why we'll say still it is 0.1 m solution, but its volume is 25 m. Is it okay? After that, it says ki it is being mixed with 50 ml of 4m H2O2 solution. Now, when you are mixing it, then the volume is again changing. But if you are mixing it, K2Cr2O7 ke moles to not changing, are not changing. And that's why we'll say it was having 2.5 millimoles. So it will remain 2.5 millimoles after mixing with, if I'm mixing it with 50 ml, what is the concentration? 4m H2SO4 solution. After that also we'll have 2.5 millimoles of K2Cr2O7. Is it okay? Why H2SO4 is being used here? क्योंकि आगे जाकर this is going to react with H2O2 का solution. What is the use of H2SO4 here? To create an acidic environment. Okay, so basically we need to create an acidic environment in which K2Cr2O7 was showing its oxidizing behavior and it was going to +3 oxidation state. है ना? To provide that acidic medium, we are using H2. ठीक है? Now, इसके बाद अब इतना हो जाने के बाद now it is saying कि we are trying to get the reaction of this K2Cr2O7 available in the final solution with some H2O2 solution. Now it says what volume of 0.02 m H2O2 solution is needed to titrate 15 ml of this solution. इसका मतलब है, अच्छा इसके पहले भी एक डाइल्यूशन किया है आफ्टर मिक्सिंग 30 ml ऑफ दिस मिक्सचर. देखो कितने स्टेप्स लगाए हैं यहाँ पे. ये था इन 70 ml वाला है ना, 25 plus 50 75 ml. अब बोल रहा है फिर से 35 ml of 30 ml of this mixture has been diluted to 150. तो पहली बात तो इसका सैंपल लिया, it is 30 ml सैंपल लिया. If you are taking sample, millimoles will be changed, concentration will not change, है ना. So if I am writing a concentration was 2.5 upon 75, that is 1 by 30 m. K2Cr2O7 का है. Whatever is comfortable to you, you can carry that. So I'm carrying this molarity because that is not changing. So we'll say this is having 1 by 30 m K2Cr2O7. ठीक है? H2SO4 is just maintaining the acidic medium and that is sufficient क्योंकि यहाँ साफ साफ 4m के साथ. Okay. So now अब इसका बोलना है कि it was being again diluted to 150 ml. So we'll write again we are doing the dilution to 150 ml. That means
we have made the volume 5 times again. और अगर volume 5 times किया है, then we'll be getting 1/5 concentration of the initial. So that's why we'll say 1/30 was the initial, divided by 5 times will be the final concentration of K2Cr2O7 solution. And that's why in this solution we have got 1/150 m K2Cr2O7. Is it okay? Now, last step. What volume of this solution is required to titrate 15 ml? Again, example here. These many steps are involved. This one question will just force you to revise all the concepts of molarity or the concentration term of mole concept. That was the purpose में. यहाँ पर आते आते बच्चे भूलने लगते हैं. That's why I give this question कि यहाँ पर देखो dilution sample, mixing sample, dilution again sample, है ना? तो यहाँ पे it has taken only, if you see 150 ml का सिर्फ 15 ml लिया है. So 15 ml sample if you are taking, that will not change the molarity, है ना? So it will remain 150 m K2Cr2O7 solution. एक दूसरा तरीका हो सकता था, I can stick to millimoles only, और जब डाइल्यूशन करेंगे तो millimoles will not change, concentration term will change, but जैसे ही मैं सैंपल लूंगा तो millimoles we need to change. ये दोनों स्टेप हो सकते थे. You can carry the molarity, you can carry the millimoles. That depends on your method कि तुम कौन सा फॉलो करना चाहते हो. Now I am having finally this solution. This solution is having how many gram equivalents of K2Cr2O7? We will write molarity is 1/150. Volume is 15 upon 1000. That is the volume in liter. And what is the N factor of K2Cr2O7? 3. 6. 3. दोनों आंसर आता है. But in acidic medium, it's 1 second. The final state was +3. It is going from +6 to +3. So the change per atom was Cr. Per atom of Cr was 3. But it is having 2 atoms, है ना? And that's why its N factor is 6. ये याद रखना, इसका एक ही N factor होता है 6. Basic medium में तो we say that it shows non-redox behavior, है ना? So that's why this much. Now H2O2 के लिए क्या detail दिया हुआ? It is asking you the volume. It has given you the molarity equals 0.02. That's why molarity is 0.02. Volume in ml we don't know. That is being asked. Upon 1000 इसलिए कर लिया क्योंकि ml में निकाल रहे हैं. And then into N factor of H2O2 is 2. तो फाइनल कैलकुलेशन इज जस्ट वन स्टेप. इसके पहले की कहानी बहुत घुमाई जा सकती है. सो दैट्स व्हाई इट विल बी, इफ यू कैलकुलेट इट, हाउ मच वी आर गेटिंग, 10 6/10 6/3/10 3/10 एंड देन डिवाइडेड बाय, तो 10 ऊपर गया 330, 15 आ रहा है क्या? आर वी गेटिंग 15 ml? लेट्स सी. 10 10,000 6/10,000, इधर 10,000 and then 0.2 0.4 and 6/s. So this is the answer. Okay, redox का part सिर्फ इतना था. This was the part of redox. But उसके पहले 4-5 step just to give you, exam में इतना नहीं देगा definitely. It was just to give you the idea कि हम लोगों ने जो मोल में पढ़ा वो याद. They may give you the cases in which they are going to dilute the solution. They can take a sample of the solution. They can do it many times. They can mix that solution. Is it okay? चलो, this was okay. इसको copy paste कर लेता हूँ मैं आगे से. Sir, one doubt. Yeah. Like here we didn't take H2SO4 at all, right? No, we need to take it. We need to take it. But मैंने जैसे ही देख लिया ना कि it was coming more than the required, फिर उसको छोड़ दिया कि it will be carried in the solution in the proportion only, है ना? Okay, yes. I have checked that कि वहां पर वो excess में दिख रहा था मुझे. But आगे जाकर I'll show you one question जो कि हम लोग iodometric titration में करेंगे. It was JEE का question जिसमें सबकी क्वांटिटी दी हुई थी. We need to check कि कौन सा limiting reagent बना. ठीक है, तो इट मे बी एनीथिंग. तो एक बार को उन्होंने दिया था कि किसी एक को कर दिया था लिमिटिंग रेजिन, दे कैन चेंज इट आल्सो, है ना? सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट आल्सो. यस, बट मैंने वहां पर चेक कर लिया था कि इट वाज लुकिंग लाइक कि एक्सेस में है, बट यू शुड चेक दैट इन एग्जाम वेदर इट इज इन एक्सेस और नॉट. ओके, बट फॉर दैट यू नीड टू राइट द बैलेंस बेस. ओके, नाउ
If you see the next question is okay, water is added to 10 ml of the aqueous solution A containing H2O2 to change its volume to, again देखो यहाँ क्या किया, dilution किया. We were having H2O2 solution which was at 10 ml. Now this was being diluted to make it 250 ml. And then इसका sample लिया है to give you 25 ml. ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन. इस ऐसा हो सकता है जिसमें एक बार उन्होंने डाइल्यूट किया, फिर से उसका सैंपल लिया एंड देन उसके बाद रिक्वायरमेंट की बात की. ठीक है, तो व्हेन वी हैव डाइल्यूटेड इट, व्हाट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज मोल्स, है ना. बट मोलरिटी वट एवर वॉज देयर इनिशियल, उसका 1/10 हो गया होगा बिकॉज सॉरी 1/25 टाइम्स हो गया होगा बिकॉज यू मेड द वॉल्यूम 25 टाइम्स ना. तो वॉल्यूम इज 25 टाइम्स, इट इज 25 टाइम्स. सो विल से, मान लो वट एवर इज आस्किंग ना वही लिख लेते हैं. वॉल्यूम स्ट्रेंथ मान लो वॉज एक्स, was x. So now for this solution, volume strength will become how much? X by 25. X by 25, because volume is becoming 25 times. So molarity will become, or any concentration term will become 1 by 25 times. So X by 25 हो जाएगा. Now you are taking a sample. Will the concentration change? No. No ना, sample लेते हैं तो नहीं change होता है ना. And that's why we'll say इस solution के लिए volume strength is still, if the initial was X, it is still remaining X by 25. Is it okay? Clear a point? Any doubt? Any doubt up to this point? देख लो, कहीं भी doubt है पूछ लो. डांट दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूछना नहीं. If you have doubt, ask. आगे. हाँ सर, बस 1 मिनट पढ़ रहा हूँ. हाँ पढ़ ले. दो ही लाइन बोल रहा हूँ मैं बार बार. डाइल्यूशन में जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन में कंसंट्रेशन कम होगा, मिलीमोल्स विल रिमेन सेम. सैंपल लेने में कंसंट्रेशन विल बी सेम. If you have taken 1/10 of the volume, then moles will become 1/10. Is it okay? These are the two things we have to follow. Is it okay up to this point? Yes. Now, अब क्या है, इस सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाया है. दिस सॉल्यूशन इज बीइंग रिएक्टेड विद some KMnO4 solution. Am I required to know the n factor of KMnO4 in this question? Should we know the n factor, or without knowing n factor we can work? So we have to know. We have to know why. Because it said ki it required that much for complete oxidation. So gram equivalence. मान ले मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका लिया x by 25, that much divided by 11.2 gives you molarity, है ना. Molarity into volume in liter gives you volume, gives you moles, and into n factor gives you gram equivalence. ये काम बार बार करते हैं. चलो KMnO4 के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा. It says 80 ml of this solution. What is the molarity or normality? 1 by 10. What is that? Normality or molarity? Normality, right? Okay, so if 1 by 10 is normality, if I simply multiply it with volume in liter, what will it give? Number of gram equivalent. So gram equivalents मिल गया ना. Why to know the n factor? Understood ना? So if they have given you normality, याद करो वो चार्ट मैंने एक दिया था conversion का. So normality into volume in liter directly gives you gram equivalent. So you don't need to know the n factor of KMnO. So that type of question gives you comfort कि ठीक है, नहीं पता है कहाँ जाने वाला है KMnO4, तो भी काम चल रहा है. Because we have directly converted. पहली बात तो डेसी नॉर्मल, if they are saying it is 1 by 10 n solution. ठीक है, तो normality is 1 by 10, and normality into, this is normality into volume in liter directly gives you number of gram equivalents. So you don't need to know the n factor. Even if you know, you are not going to use that. कर दिया तो गड़बड़ हो गया. ठीक है. Now if I have to solve it, just solve it, है ना. तो x निकल आएगा. तो x देखो ना 25 कैंसिल आउट हो रहा है, तो
to x by 5.6 into 1000 is becoming, अच्छा 1000 cancel कर लो. So x by 5.6 is 1.8. X will be 5.6 into 1.8, है ना. तो डबल वॉज 11.2, उसमें से 0.2 माइनस कर दो, 1.12 माइनस कर दो, दैट विल बिकम 10.08. क्या Yes, sir. दिस विल बी द आंसर. ओके. So these questions like this is typical in the exam. हाँ, इसको मैं अभी भी एडवांस नहीं कहूंगा. एडवांस में इट विल बी कंसिडर टू बी एन इजियर क्वेश्चन. ठीक है, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन बिकॉज इट इज सिंपली सेइंग डाइल्यूशन किया, सैंपल लिया और फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर किया, इतना ही है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, in this question, if you see excess of acidified solution of Ki was added to 25 ml of H2O2, the iodine liberated. That means somehow we have got the reaction between Ki and H2O2, and that is liberating I2. And that I2 liberated is requiring this much of Na2H2O3. Now the question is, we need to know what is the role of Na2H2O3, what are the roles of Ki and H2O2. So even if you don't know the reactions, now we know that when we are having Ki and H2O2 का reaction, इतना पता चला कि I2 बना. I2 बना, that means this was -1 से 0 बना, तो this is oxidized. If this is oxidized, so whatever product will be there, this will be reduced. है ना? So if it is reduced, तो मैंने पहले ही बता दिया ना, whether it is undergoing oxidation or reduction, इसका n factor is 2, है ना. So that's why we are saying इसका n factor is 2. Clear है? Now that I2 का reaction with Na2H2O3 हो रहा है, और मैंने तुमको ये हाइपो पढ़ाया था लास्ट टाइम एंड बोला था कुछ ना दे तो वी कंसिडर एसिडिक मीडियम, या फिर एसिडिक मीडियम भी दे दे तो प्रोडक्ट वे आर हैविंग और प्रोडक्ट वेयर NaI plus Na2S4O6. If it is basic medium, then it was Na2SO4 as the product. तो एन फैक्टर अलग अलग हो जा रहे थे, सब रिवाइज करो, नहीं तो एकदम ये चैप्टर लूज किया तो कुछ नहीं आया. मतलब दीज आर द मार्क्स गिविंग चैप्टर्स, इसमें एक बार कुछ बातें समझ में आ गई तो हर बार देखो मैथ चल रहा है, सिंपल सा मैथ चल रहा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाता है. यहाँ पे इफ यू सी इसका एन फैक्टर, ये देखो ना, -1 से 0 में आ रहा है, 1 का चेंज पर आई, इट इज हैविंग 2i, सो इसका एन फैक्टर इज 2. यहाँ भी इसका एन फैक्टर इज 2 बिकॉज ये 0 से -1 में जा रहा है. यहाँ पे इफ यू सी सल्फर वाज गोइंग फ्रॉम +2 टू +2.5, 0.5 का चेंज पर सल्फर, सो इसका एन फैक्टर इफ आई से 0.5 का चेंज पर सल्फर, इट इज हैविंग 2 सल्फर, सो इट्स एन फैक्टर इज 1. इज इट ओके? नाउ इफ आई राइट फर्स्ट स्टेप, देखो एक बार में कैसे सॉल्व करेंगे इसको. इफ आई राइट फर्स्ट स्टेप, gram equivalents of H2O2 will be same as the gram equivalent of I2 produced. ठीक है, I'll write that. एक बार को लिख लो, फिर बाद में we'll get the idea. Step 1 में we are saying gram equivalents of H2O2, वो क्यों कर रहे हैं? Because Ki was in excess, है ना. And that's so उसका कुछ ना कुछ बच गया होगा, तो we are simply saying gram equivalents of H2O2 consumed is equal to gram equivalents of I2 produced. And then in step 2, that I2 produced is reacting with Na2H2O3. So we are saying in second step, gram equivalents of I2 consumed will be equal to gram equivalents of Na2H2O3 consumed. है ना, सिंपली दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में कुछ भी नया नहीं किया, बट जो नया है वो ये है
कि फर्स्ट टाइम आई टोल्ड यू कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, और यही जो प्रोड्यूस हुआ यही तो इधर कंज्यूम हो रहा है. सो अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो फिर ये दोनों चीजें भी बराबर हो जाएंगे. If A is equal to B, B is equal to C, then we can say A is equal to C. Simple सी चीज है. So directly we can say in this question, gram equivalents of H2O2 consumed in step 1 will be equal to gram equivalents of Na2H2O3 consumed in step 2. Now it becomes one line ka question. That one line is, if it is asking volume strength batao, I'll assume that ki volume strength is X. Just assume that ki this volume strength, assume kar lo ye X. If volume strength is X, then X upon 11.2 gives you molarity. That much into volume. Volume is how much? It is 25 ml. So 25 by 1000 gives you moles, into 2 gives you gram equivalents. And that is equal to gram equivalents of Na2H23. The detail is 20 ml, 0.3 ml. And n factor is 1. So 0.3 is molarity. 20 ml ka matlab 20 by 1000. And then n factor is 1. So itna hi solve karna. If you solve it, what we are getting, 1000 cancel, 6 upon 50 into 11.2. 66, 67.2, double of that will be 134.4. So it will be 13.44 जैसे कुछ आंसर आ जाए. ओके, क्लियर है? देख लो एक बार कहीं डाउट है तो पूछो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू सेक्शन. ये जो मैंने अभी किया ना, इनडायरेक्टली आई हैव गिवन यू क्वेश्चन फ्रॉम समथिंग कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन था. बट आई टोल्ड यू कि ये बेसिक्स ही है जो समझना है. इनफैक्ट उसके बाद देखोगे हर जगह कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस रहे. आई एम गोइंग टू गिव यू दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन, बट बेसिक इज ऑलवेज सेम. देयर इज नथिंग न्यू इन दैट. क्या हर्ष? So I think it's 1.34. देख ले, कैलकुलेशन देख लो. नहीं ना, 66 है ना. हाँ हाँ 66 है, 1.34. सॉरी, मैं 66 अपॉन 50 है ना, तो 1 पॉइंट जाएगा. सॉरी, 1.344 ऐसा कुछ आएगा ना. Okay, done. Any doubt? चलो, तो these were the questions from H2O2 से related मैंने दिया. अभी now we are going to एक और compound है जिसकी बात हम लोग करेंगे, because sometimes it will be used and it is also having a particular concentration term, specified concentration term. Like I have learned the concentration term of H2O2 solution as volume strength, है ना? That was a new very specific concentration term defined only for H2O2. वैसा ही there is something called oleum, or we also call it fuming sulfuric acid. उसकी बात कर लेंगे because that is also a compound जिसका एक अपना ही कंसंट्रेशन टर्म मिलता है. इनफैक्ट मार्केट में जब इसको सेल किया जाता है तो उसी टर्म में किया जाता है. व्हाट इज दिस ओलियम? ओलियम इज सिंपली you have got SO3 which will be compressed in the H2SO4. Is it okay? SO3 compressed in H2SO4 as a whole is called oleum. Is it okay? Now in this oleum we are writing, we can also express it like H2SO4 dot XSO3. कई जगह क्या लिख देगा ना, H2S2O7. That's wrong to say because you don't know what is the mole fraction of SO3 in that composition. So that's why in general we should write H2SO4 dot XSO3. We don't know how much is that. हाँ Krish, you are asking something? सर वो मतलब आई वाज आस्किंग कि इसको मार्केट में ऐसे बेचते हैं, बट लाइक फॉर व्हाट रीजन? क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है ना, आई टीच यू, जब मैं H2SO4 का प्रोडक्शन बताऊंगा ना, उसमें क्या होता है ना कि यही बना के रखा जाता है. एंड देन व्हेनेवर वी नीड H2SO4 ना, तो इसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एडेड. सो द होल SO3 कंप्रेस्ड इन दैट will be forming H2SO4 and then we can use the H2SO4. ठीक है? So that's a process वो inorganic में मैं पढ़ा हूँ. ठीक है? So that's one part. Now इसके लिए जो concentration term define किया वो क्या है? That is called percentage labeling of. I'll just give you the definition. Just देखो इसको, and then we'll explain. We'll understand it. क्या है ये? So if you see the definition, it says simply, if I am having 100 gram of oleum,
given oleum. We don't know how much is SO3, how much is H2SO4, but it will be a combination of both the things. If I'm having 100 gram of oleum, if I add water to it in sufficient amount, it will produce total some H2SO4, some total of H2SO4. Whatever amount of that total H2SO4 obtained after dilution will be called the labeling of percentage oleum. Is it okay? Clear? Now, So, what is so when you're mixing it, the SO3 gas escapes. No, it will not escape. It will react with water to form H2SO. See, Okay. what the reaction is, I'm having SO3 gas, and if I add water to it, it will produce H2SO4. Okay. Now, I've given you let X percent SO3 by mass was present in oleum. That means X gram was oleum, then 100 minus X gram was already H2SO4 present there. Is it okay? So, Before tell, Haji. so I'm getting confused. Oleum is SO3 or is it H2SO4 dot XH SO3? This is having some H2SO4 and SO3 compressed in that. And this whole thing is called oleum. Okay. So then they said 100 gram sample of oleum. I have taken some oleum in which both of these things will be there. Huh. So that means before dilution, if I am having total 100 gram of sample, X gram will be SO3. So remaining 100 minus X gram will be H2SO4. If Yeah. we are not doing anything. Huh. If I say SO3 ka percentage by mass in that given sample of oleum was X percent. It means 100 gram will have X gram SO3 and remaining 100 minus X gram will be H2SO4. Now I am adding water. Is it okay? So excess water I am adding so that after dilution, all the SO3 will get converted into H2SO4. Now this is how many moles? This is X upon 80 moles. है ना? Molecular mass से molar mass से divide कर. Now we know that by the coefficient of these two things are same. Na? That means whatever moles of this will be consumed, same will be इसका moles produced. है ना? And that's why ये कितना बन जाएगा? तो 100 minus X तो पहले से था. Its mole का production will be X by 80, तो mass will be X by 80 into 98 का. Is it okay क्या? This was mass. Moles बराबर जितना ये consume होगा, SO3 का moles consumed will be equal to H2SO4 का moles produced. And that's why we have taken ki if initially X by 80 moles of SO3 was present, same moles of H2SO4 has been produced. And these many moles will have what mass? These many moles into molar mass of H2SO4, that is 98. So that's why ultimately if you see this calculation, it is giving you 100 plus 18 by 80 into X. Or we can say 100 plus 9 by 40 into X. And that gives you actually a formula of percentage labeling. And it says if X percent by mass SO3 was present in the given oleum sample, then the percentage labeling will be 100 plus 9 by 40 into X. Is it okay? So we can summarize it like a formula. And that formula is percentage labeling of oleum will be 100 plus 9 by 40 times percentage by mass of SO3. Is it okay? Now I am giving you a table. जरा उसको फटाफट fill कर दो. If I am giving you So SO3 can be variable. हाँ मतलब I can have different types of samples है ना. You can have एक ओलियम है जिसमें मैंने 20% बायोमास मेंटेन किया SO3. There can be a sample in which I have maintained 40% biomass of SO3 है ना. It is our choice ना कितना compress करना है मेरे को ना. It is not fixed amount. But greater the percentage biomass of SO3, more will be the percentage of oleum, percentage leveling of the oleum है ना. ये तो दिख रहा है. Because percentage by mass of SO3 में एक increasing function दिख रहा है ना. देखो ना जरा percentage by mass की जगह 0 रखो. How much you are getting? Percentage leveling 100. 100 मिल रहा है. उसी में अगर मैं 0 की जगह 40 रख देता हूँ, how much you are getting? 109. 109. तो बढ़ गया ना. So if you have got greater percentage by mass of SO3 in the oleum sample,
more will be percentage leveling in oleum. Okay, and that's why I'm giving you a table. जरा फटाफट fill करके देखो, you'll get a pattern. Sir, percentage labeling can be more than 100, the value. हाँ, percentage leveling तो बात ही ये कर रहा है ना कि 100 तो पहले से था. After diluting whatever total H2SO4 we have got, that was percentage leveling. So it will always be more than 100. In fact, the minimum value can be 100 only if there is no SO3. Okay, so see this table and tell me the values. Percentage SO3 by mass is 0. First way is it will be 0. So there are two ways. या तो percentage leveling की जगह the given value रख दो and then calculate it. This will be 100%. That means if you are having pure H2SO4, then only you are getting 100% leveling. So for a practically available sample, it will always have percentage leveling more than 100. है ना? Second बताओ. 20%. Okay, so 104.5 जैसे यहाँ लिखा, difference will be 4.5 into 40 by 9 will give you 20. So this was 80%. Third one, ये तो अभी just 40%, 60%. this is 40, है ना? This will be 60. Next one, now you can get the pattern, है ना? 4.5 बढ़ाए तो 20% बढ़ रहा है ना? तो 4.5 बढ़ाए तो ये 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर ये 100 हो गया, यहाँ पे 40, 20 and 0, which means maximum percentage leveling इतना ही possible है क्योंकि you have got 100% SO3 and minimum percentage leveling is possible this much only because you have got 100% H2. And any practically available sample of oleum will have in between 0 to 100% by mass of SO3 present again, है ना? तो percentage leveling of oleum cannot have value less than 100. It cannot have value more than 122.5. तो कोई मार्केट में 125% लेवलिंग करके बेच रहा है तो बेवकूफ बना रहा है. सिंपल सी चीज है ना. यू कांट हैव दैट वैल्यू. So this is the initial mass of H2SO4, no? If in the given oleum this is the percentage by mass of SO3, then its percentage leveling will be called this much. It means मान लो कोई एक सैंपल लिया, मान लो ये वाला सैंपल लिया जिसमें 20% बाय मास है. It claims that if you add sufficient water, total H2SO4 available will become 104.5. That is the meaning of percentage oleum, percentage leveling. चलो एक अच्छा Can क्वेश्चन. get more H2SO4 if we add water to that thing. तो उससे H2SO4 will not be changed. Total H2SO4 is changing because SO3 is getting converted into H2SO4. हाँ. So if you are having the fixed amount of SO3, if you have converted that into H2SO4, even if you add more water, that is not changing the mass of H2SO4 in this condition. है ना? And that's why percentage leveling का फर्क नहीं पड़ता है if you have added a sufficient amount of water or more than that. है ना? It will not change the percentage level. Okay. So percentage labeling is just the value, total value of H2SO4. Like, Yeah, this is just an indication of the concentration of SO3 present in the sample of oleum. It is another way of calling it कि हाँ ठीक है 109% है तो एक इंडिकेशन दे दिया. Practically oleum का purpose क्या है? To get the H2SO4. If I am going in market, someone saying 109% leveling है इसका, that means I know that कि मैं अगर 100 ग्राम लेकर आता हूँ ना, I can have 109 ग्राम H2SO4 after adding water. That is the reason of defining it in that. है ना? Wait, if we get 100 grams of oleum, that is 109%, then if we add enough water, we'll get 109 grams of H2SO4. H2SO4, yes. Okay. That was the basic Yes, sir. definition. Okay. Someone is has labeled it 118. Percentage labeling is 118. That means market से मैंने अगर 100 ग्राम लिया है, that means I can get 118 ग्राम H2SO. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो.
We are getting different answers. I don't think अभी तक कोई भी right answer मिला मुझे. One of you have got the right answer. मतलब I've got I think 4 answers. उसमें से एक right है, बाकी wrong. So keep checking. जो confident हो, I'm giving you another question. Move on to next question if you are confident about the answer. Now 2 people have got right answers. अभी भी 2 ही लोगों का आंसर राइट. नो. Yusha and Sonia have got the right answers. बाकी सब करो. No, Prisha, your answer is not right. काफी सारे लोगों का same answer but wrong answer आ रहा है. So I'm definitely curious about the method. Okay, जिनका जिनका 15 ग्राम आया है, any one of you can give me the logic. 15. Okay, tell me Raghav. मतलब like so 109% and 115.75 मतलब there's 20% and then so 30% वैसे हो गया ना, क्योंकि आपने बताया था 4.5 के चेंज के लिए 20% बढ़ता है, तो then I got 30% like that. So फिर 30% of 50 grams, but then I Difference here is how much? This difference is 6.75%. हाँ मतलब 4.5 plus 2.7 नहीं. Okay, so you have got 30% का change है. हाँ, Okay. I might have made some calculation error. Even I got 30% and 30% of 50 grams, so 15 grams. Yeah. What is the basic problem, Sonia? Can you identify what they are saying? What is wrong in their method? If we add this mass, then mass of the sample will increase. So 19.5 है. Huh? 19.5. No, that is not right. But the problem you have understood that if I am adding SO3, the total sample ka mass will not remain constant. You can't take that initial total mass was 50 gram, final total mass is also 15 gram. That is not going to happen. Sonia, what's your method? So पहले I calculated percentage of By mass of SO3. SO3. हाँ. How much you have got? So 40% यहाँ पे? Yeah, I got 40%. So 40% of 50 grams is the grams of SO3. That is 20 gram SO3. है ना? And then I calculated percentage of SO3 in 115.75%. Okay. How much is that? I got 70%. Okay. This is 70% by mass SO3. Okay. Now
So I think थोड़ा mistake किया मैंने. फिर भी राइट आंसर आया. युषा, हाँ. you tell me. Yusha, you there? Yusha का माइक नहीं चल रहा है क्या? Okay. So I'll give you the most easiest, मतलब the easiest method I'll give you. What is not changing in this case? Yeah, Trusha, now you have got the right answer. What is not changing? Anyone? Again, I'm telling you, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ इससे आएंगे ना. What is not changing? What is not changing in this whole story? Mass of H2SO4. Mass of H2SO4, it was remaining 30 gram, na? Which was initial ka, this was 40%, this was 60%, hai na? Now, if you have added some X gram of SO3, this has become 20 plus X gram. So this will also become 50 plus X gram. So I think that's 70%. Which one? The 30 gap. Initial, when it was 40%, so this will be 60%. Na? Initially, SO3 का percentage कितना था? 40%. 40%. तो remaining 60% was H2SO4. Na? Sorry, H2S4. I didn't see that. That's the thing I'm telling you. Now, so if you have added some SO3, which was X gram, so this has become 20 plus X gram. This has become 50 plus X gram, but still H2SO4 is remaining 30 gram. And with this data, which we have got, that 115.75% labeling means 70% by mass of SO3. It also means 30% by mass of H2SO4. Which means we are saying this 50 plus X ka 30% is nothing but 30 gram. 30. Which means 50 plus X is nothing but 100. Which means X is 50. Is it okay? So you must add 50 gram of SO3. Then only we can say that its percentage labeling will become 115.7. Is it okay? Anyone having any doubt? So like we know that 30 grams of H2SO4 is constant, but we are adding more, so it kind of gets like diluted. So इसके लिए the new percentage of H2SO4 is 30%, which is the same mass. Yeah, mass was same, but you have got, see, I'm having one pen and two pencil. So percentage was one, fraction was 1/3 for the pen. अभी मैंने two pencil और add कर दिया. It has got 1/5. Number तो same है ना, but the fraction has become less, or any concentration term will become less. है ना? That was the point. So mass of H2SO4 is not changing, but percentage by mass will change because the total mass we have changed. Yes. Okay, next question. This is a hypothetical concept. If I am talking about something called fuming nitric acid, in the same manner which I have talked about, like fuming H2SO4 or fuming sulfuric acid, the basic definition is same. In this case, percentage labeling will be the total mass of HNO3 obtained from the given fuming nitric acid, which is the combination of NO, N2O5 and HNO3. Okay. Now, can you tell me 60% N2O5 by weight will have how much labeling, percentage labeling? एक बार repeat कर सकते हो? Again, I am telling you, जैसा पिछली बार क्या था, SO3 compressed in H2SO, and when we are adding H2O, SO3 was forming H2SO. This time I am having HNO3 के अंदर N2O5 gas compressed, and when I will be adding H2O, N2O5 will react with water to give you HNO3. So in that manner, percentage labeling for fuming nitric acid has been defined, and it is asking if you are having 60% by weight of N2O5, like last time हम लोगों ने percentage by weight of SO3 से percentage labeling को relate कर लिया था. In the same manner, it is asking just relate the percentage by mass of N2O5 to the percentage labeling. But it is in the case of fuming nitric acid. It is not fuming sulfuric acid or oleum. नहीं, उषा wrong है.
हाँ क्रिश, सर एक बार डेरिवेशन पे जाइए ना। डेरिवेशन ये वाला, ओके। हाँ इसका। हाँ सर। हाँ सर हो गया। यूसर तूने फिर 2-3 आंसर दे दिए। यूसर तो चले, थोड़ा वो डाउट है कि 2N2O5 में 2H2O3 में 100 - x आएगा कि 200 - 2x आएगा, ओके ओके, विल टॉक अबाउट इसलिए दैट। दोनों केसेस कंसिडर करके आंसर दे दिया। बट इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक क्लियर नहीं है ना? हाँ सर, हाँ। ओके, विल सी दैट। So for those people who are not able to write the reaction is like labeling तो 100 से ज्यादा होगा ना हर, how can it be less than 100? Oh, sorry, percentage ले लेगा, हाँ यार। N2O5 will react with H2O to give you HNO3, but this time this is not the balanced reaction, है ना? If you want to balance it, we need to put here इधर 2 डाल देंगे तो I think it is not balanced, है ना? This we don't need to do oxidation state है ना? नहीं ना, यहाँ तो सिंपल देख के पता चल रहा है। अच्छा। देखो ना, इधर 2 कर दिया तो बैलेंस, ठीक हाँ। है। Now before dilution, if I take this was x gram, like यहाँ 60 दिया but x में पहले निकाल लेते, then we'll put x equals 60 at the end, so that we'll get the formula also. This was 100 minus x gram. Now after dilution the reaction will happen, but what about the moles of this thing? If you want to work in terms of moles, the molar mass of N2O5 is 28 plus 80, 108. 108. So these many moles were there. Now this will become 0. Now coefficient says, यूषा ध्यान से देखना, बाकी सब लोग जिनको confusion होता है, coefficients are relating the molar consumption and molar production. That means we are saying if the coefficient का ratio is 1:2, that means whatever will be the moles consumed of N2O5, उसका double will be the moles of produced HNO3, moles of HNO3 produced. And that's why this will have 100 minus x gram तो पहले से था. Now it has got double of x by 108 moles produced, and we want to talk about the mass produced. So now इतने moles का mass कितना होगा, तो we'll multiply it by molar mass of HNO3, and that is I think 63 gram आता है. सर हाँ जी, मुझे उसमें डाउट है कि 2HNO3 को हम लोग ने 100 - x क्यों लिखा, 200 - 2x क्यों नहीं लिखा? 2HNO3 is not a substance. Substance is HNO3. ठीक है? तो फिर टू वो क्या पूरा बताता है? टू बताता है कि जब ये रिएक्शन में आएगा ना, when N2O5 will react with H2O, तो मोलर कंजम्पशन देखना, कंटेनर के अंदर तूने HNO3 रख दिया, N2O5, ये तो अपन पेपर पे इसको बैलेंस कर रहे हैं ना. कंटेनर के अंदर तुमने क्या रखा है उसको क्या पता तू पेपर पे क्या कर रहा है. मैं तो ये भी लिख सकता हूँ ना, हाफ N2O5 गिविंग प्लस H2O प्लस हाफ H2O गिविंग HNO3, ये भी तो लिख सकता था. फिर क्या करता तू? तो बैलेंसिंग तो अपना तरीका है ना, कि हम लोग एटम्स बैलेंस करने के लिए वी कैन डू इनफाइनाइट वे में, है ना. बैलेंसिंग कैन बी डन इन इनफाइनाइट मैनर्स. दैट्स व्हाई जब बैलेंसिंग के बाद जो कोफिशिएंट्स आते हैं, दोज आर जस्ट रिलेटिंग द मोल्स कंज्यूम्ड एंड द मोल्स प्रोड्यूस्ड. इज इट ओके? मेरे पास एक कंटेनर है सिंपल सा, देखो ये बच्चा कोई रहेगा ना, वो ज्यादा अच्छे से जवाब दे देगा. इफ आई एम हैविंग, मान लो ये बॉटल, इसमें पानी भी डाला और इसमें मान लो कोई ऑयल भी डाल, एंड इफ आई से टोटल जो है 250 ग्राम है, उसमें से पानी वाज 150 ग्राम, तो ऑयल वाज हाउ मच? 250 में से 150 पानी है, तो 100 वाज ऑयल, है ना. इसके लिए तो मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं लिखा अभी, बट यू आर सेइंग ना कि 100 ग्राम रिमेनिंग विल बी ऑयल. समझा क्या यूशा? यस ज्यादा पढ़ने से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना. So कोफिशिएंट, इफ आई एम हैविंग 100 ग्राम मिक्सचर, भूल जाओ ये रिएक्शन लिखा, बैलेंस किया. इफ आई एम हैविंग 100 ग्राम मिक्सचर जिसमें वन कंपोनेंट इज 60 ग्राम, तो दूसरा कंपोनेंट कितना होगा?
कितना होगा? 100 में से पहला 60 है तो दूसरा कितना? 40 ग्राम ना. आई एम राइटिंग 100 माइनस 60. सो आगे क्या होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने रिएक्शन लिखा और बैलेंस किया, एंड दैट बैलेंस्ड रिएक्शन इज गिविंग यू द रेशियो ऑफ मोलर कंजम्पशन एंड मोलर प्रोडक्शन. इज इट ओके? क्लियर है? तो मैंने बोला अगर इसका इतना मोल कंज्यूम होगा तो इसका इतना मोल प्रोड्यूस होगा. चलो एक लाइन लिख देता हूँ, फ्यूचर में ये काम आएगा तुम्हारे. That part If I, is after dilution, no? yeah, this is the produced moles. This is produced moles. This was initial mole already there. Uh, This is the produced mole and this is the produced mass. yes. And this This is is total still mass after dilution. okay. That entire thing is after the dilution. After dilution, total mass available of HNO3 will become. So we are saying percentage leveling of fuming HNO3 or fuming nitric acid will be, if you solve it, you'll be getting even more simpler. ये देखो ना, ये cancel out होगा 23 से कर लो तो it is like 54 आ रहा है, and then 3 से 18 21, so 3 से 6 and 7, तो 7/6 minus 1 कर लोगे तो 1/6 आ जाएगा. It will become 100 plus x/10 आ रहा है. ठीक है, where x is percentage by mass of N2O5, है ना? So now we can say this is 100 plus 1/10 times percentage by mass of N2O5. And that's why we are going to get, for the given solution, we have been given that it was 60% by mass in N2O5, and that's why it will become 106. Is it okay? क्वेश्चन में ये 60% दिया हुआ था, बट इन जनरल अब कोई भी नंबर बोल देगा तो विल पुट दैट एंड विल गेट द आंसर. So here we are considering water as negligible. 1 minute. अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ 1/6 आएगा, नॉट 10. यहाँ वी आर गेटिंग 1/6 है ना. 7/6 minus 110, right? this will become 110. Yes. 7/6 minus 1 आया था ना, that is 1/6. That's why it is 110. This will be the answer. कुछ लोगों का आंसर राइट आया ना. निशिता has got the right answer, I think. इधर हाँ, निशिता का आंसर क्लियर ना सबको? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कैसा है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी तो कोचिंग इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो गया है, बट अदरवाइज जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड कि दे वांट यू टू थिंक फ्रॉम द स्क्रैच. सो ऐसा देखो, अपने मन से एक फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डिफाइन कर दिया. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द परसेंटेज लेवलिंग फ्रॉम द बेसिक्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका फॉर्मूला कहीं नहीं है स्टैंडर्ड. तो दे आर डिफाइंड समथिंग न्यू, नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम द स्क्रैच. जैसे सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन रिसेंटली 1-2 साल के अंदर ही पूछा. उन्होंने कहा एक नया लैटिस बनाना है मेरे को, तो जब सॉलिड स्टेट में जाएंगे ना तो विल डिस्कस दैट पार्ट. उन्होंने स्टार्ट से बोला कि ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो. इफ यू डोंट, मतलब वो किसी बुक में तुमको वो चीज नहीं मिलेगी. दे हैव टोल्ड यू कि ये तुम करके बताओ अब क्या फाइनल रिजल्ट आएगा. तो ऐसे 3-4 स्टेप्स उन्होंने अपने मन से बनाए कि अच्छा तुमने NaCl का स्ट्रक्चर देखा है ना, उसके बेसिस पर भी एक नया क्रिस्टल बना. तो जहां पर कैटायंस होते थे वहां पर अनायंस को रख दो, जहां अनायंस होते थे वहां कैटायंस रख दो, फिर यहाँ इस पोजीशन वाले कैटायंस को हटा दो. इस टाइप का क्वेश्चन जब वो क्रिएट करते हैं ना, तो दैट बिकम्स द रैंक बूस्टर की तुमने अगर अच्छे से समझा हुआ है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई. फॉर्मूला रट्टा मारा तो यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना. बाय जस्ट द फॉर्मूला की सर ने बताया था 100 plus 9/14 into 40 into percentage by mass of SO3. लो अब ये करो सॉल्व. So if you don't understand the basic, तो ये क्वेश्चन नहीं जाएगा. तो these type of questions are advanced का क्वेश्चन जिसमें you have to think from the scratch. ठीक है, after understanding the basics. Okay, so this was basically इतनी कहानी मैंने जो पढ़ा दी. What are the compounds we have covered? One was KMnO4, another was K2Cr2O7, third was oxalates की लिस्ट, चौथा था सोडियम थायोसल्फेट और हाइपो सॉल्यूशन वाला पॉइंट देखा था, H2O2 देखा, ओलियम देखा. ठीक है, इतना सब कुछ देख लिया. और इस सबके स्टार्ट में जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा था, इट वाज सिंपल टाइट्रेशन. इफ यू रिमेंबर, सिंपल टाइट्रेशन का मतलब इतना भी सिंपल नहीं था, बट द मीनिंग वाज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेडॉक्स टाइट्रेशन, gram equivalents of oxidizing agent consumed will be equal to gram equivalents of reducing agent consumed.
यही कर रहे थे हर जगह. If I'm having acid base reaction, I'm writing gram equivalents of acid consumed will be equal to gram equivalents of base consumed. Now we are coming to another type of titrations. You can have more than two or more than two steps, and it will have a particular type of structure in the given question. So वो structures कौन-कौन से हो सकते हैं? तो basically जो the remaining part of the chapter is having something called back titration, iodometric titration, iodimetric titration, and there is something called double titration. ठीक है? तो एक part तो कम से कम आज कर लेंगे, that is called back titration. 2 cases देखेंगे इसमें और दोनों cases की conditions देखेंगे. What should be the conditions, and then we'll see the calculation. So now when I say back titration, question में लिख के नहीं आएगा कि I am asking you back titration का question. We need to understand by the language of the question कि अच्छा सर ने जो ये back titration पढ़ाया था ना, this question has come from that back titration only. तो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? तो पहली बार टारगेट क्या होता है, पर्पस क्या होता है बैक टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस का, कि they will give you a question in which they'll be talking about some sample which can have a particular one reacting substance along with some impurities. That's one case, which is the case one जो तुमको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे. Second case can be you can have two compounds का mixture without any impurity. ठीक है? पहला क्या मैंने बोला? You can have one reacting substance present with inert impurities. Impurities are not going to react. Second case, you'll be having a mixture of two reacting substances, but in that case, there should not be any impurity. Is it okay? उसके composition का estimation will be the purpose of back titration. जैसे बोल देगा एक सैंपल है H2SO4 का, इट इज हैविंग सम इनर्ट इम्प्योरिटीज, अब उसको ट्रीट किया बेस से, फिर बेस एक्सेस में लिया था तो बचा हुआ बेस के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ HCl सॉल्यूशन इज दिस मच, ऐसा कुछ वो बोलेंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग कि it will start with a sample in which you can have two types of cases. One case you'll be having a substance along with some inert impurities, and then they'll at the end of question they'll ask you percentage purity or percentage impurity in the initial sample, batao. Understood the point? One substance present with one reacting substance present with inert impurities. Okay? And then they'll ask you percentage purity or impurity of that sample, and it will go through two steps of titration. Okay? दूसरा है you'll be having a mixture in which you'll be having two substances, two reacting substances, but there is no inert impurity. Like I'll give you a mixture of, मान लो मैंने बोल दिया KMnO4 और K2Cr2O7 का एक mixture है, and it was being titrated with H2O, and the excess of H2O2 लिया था, and the remaining H2O2 will require this much of some another oxidizing agent like F2 या कुछ ऐसा. Then again they'll ask you कि initial sample जो था ना KMnO4 और K2Cr2O7 का, उसमें KMnO4 कितना था percentage by mass, that type of question they'll be asking. So this question has come from back titration. Have you understood the cases? Case 1 क्या है? One reacting substance plus inert impurities. Case 2 क्या है? Two reacting substances without any impurity. ठीक है? अब ये क्या है? Steps देखो क्या है? First case where you are having just one reacting substance present with inert impurity. Language से ही identify करना होगा कि they'll be saying कि ये substance A जो है ना, it was reacted with a reagent B in excess, and then because B was in excess, so remaining B will require some another substance C to react and completely consume. स्ट्रक्चर वाइज कैसा दिखेगा ये? तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन में आगे देखोगे लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बड़ा होता है. ठीक है? तो व्हेनेवर यू हैव गॉट द डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 5 6 7 लाइंस दिखने लगे क्वेश्चन में, स्टार्ट ड्राइंग द एरो वाला डायग्राम. व्हाट इज हैपनिंग? यू आर हैविंग सब्सटेंस ए, देन देखोगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी. सब्सटेंस ए इज प्रेजेंट एंड inert impurities are there. Now that substance A is reacting with B, and B was in excess. So what will happen? Some products will be formed, but some B will remain unreacted with excess में. So plus unreacted B. Okay. Now this unreacted B will be undergoing a reaction
और remaining B कहूंगा मैं, I'll say remaining B. Remaining B will be treated with substance C, and then it will be just sufficient amount. जितना चाहिए उतना ही, मतलब यू आर डूइंग दैट एस्टिमेशन की कितना चाहिए और उतना ही ऐड किया, और या फिर कहोगे कि रिक्वायरमेंट चेक की कि कितना चाहिए से, and then you will have some another set of products. Is it okay? So we have got three substances A, B, and C. Now I'm asking you one question, and that will give you the identification of the question, and that will give you the solution also. What is that substance which is reacting with more than one substance? B. B, because B is reacting with A in first step, and the remaining B is reacting with C. Is it okay? So like if B is an acid, then A can be base, C can be base. If B is a base, then A and C can be acids. If B is an oxidizing agent, then A and C can be reducing agents. Is it okay? Understood the point? क्योंकि यही आइडेंटिफिकेशन में ऐसे लगेगा, आई विल शो यू अ क्वेश्चन, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसे आइडेंटिफाई करोगे फिर कहानी सिंपल हो जाती है। ये कहानी क्या है, देखो ना, बी के कुछ ग्राम इक्विवेलेंट्स थे, पहले रिएक्शन में इसके कुछ ग्राम इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हो गए, बचे हुए सारे ग्राम इक्विवेलेंट्स सेकंड रिएक्शन में कंज्यूम हो गए। तो कैन वी से स्टेप 1 में ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए जितने भी थे, दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी कंज्यूम्ड इन स्टेप 1, and step 2 में, because we have taken just sufficiency, so we can say whatever gram equivalents of C has been mentioned there, it will be equal to gram equivalents of B consumed in step 2. If I add these, क्या हो जाएगा देखो, so we'll say gram equivalents of A plus gram equivalents of C will become equal to total gram equivalents of B. बस हो गई कहानी, इतनी है। अभी जो डिटेल दिया हुआ है वो लिख दो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट्स। इज इट ओके? या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट्स। इतनी कहानी है। इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया था बहुत पहले बिना बताए हुए इसका। हाँ, इसमें क्या करना है ना, एक चीज सिर्फ ध्यान में रखना, बी का एन फैक्टर शुड नॉट चेंज इन द टू स्टेप्स, because if n factor is changing with same mole you will be getting different gram equivalents, है ना। ये कंडीशन क्या है, if n factor, और तुमसे यही नॉर्मली पूछा जाता है, of b is same in both the steps। ठीक है? is it okay? no, I'll give you one question based on this, जरा पहले पहचान तो लो इसको। this is the question। बैक टाइट्रेशन का केस 1 है, ये पता चला क्या? what is b in this case? NH3. logic? It's reacting with both H2SO4 and NaOH. NH3 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। H2SO4. ओके, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा। अमोनिया इज अ बेस ना,
it is reacting with H2SO4 and it says the resulting solution requires a base again. That base is required for what? H2SO4 के लिए ना. That's why we are saying कि ammonia is A, H2SO4 is B, and this NaOH is C. बस हो गया एक लाइन में. Now H2SO4 without giving any reaction, इसका N factor in acid base reaction is 2. है ना. तो एक लाइन में सॉल्यूशन लिखेंगे. फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ C will be equal to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B. लिख लो फटाफट बताओ. No, you sure your answer is not right. Now you are right. अभी बता मिस्टेक क्या किया. सर वो 21 into 17 में 7 को बहुत बुरी मिस्टेक है. 7 को 1 लेके मैंने मल्टीप्लाई. बर्बाद हो जाएगा तू कैलकुलेशन के चक्कर में. Now we have identified A, B, and C. So we are saying gram equivalents of NS3 plus gram equivalents of NaOH will be equal to gram equivalents of H2SO4. Which means now generally my preference is जो पूछा वही मैं assume कर लेता हूँ. तो let that be X%. ठीक है. So now 2 gram का X% was actual ammonia present. This is the mass of ammonia divided by 70 will become the moles of ammonia into N factor will become gram equivalents of ammonia. Is it okay? देख लो सब लोग. Plus similarly for NaOH we have got molarity into volume in liter gives you moles of NaOH, and NaOH का भी N factor in acid base reaction is 1, and that will be equal to इसकी molarity is 0.25 into volume in liter is 50 by 1000, and N factor of H2SO4 in acid base reaction without mentioning the reaction is 2, and that's why this will be the option you have to solve it, है ना. So देखो ना, this is coming x upon 850. ठीक है. Will be, if you see this one, 1 by 10 to 25 by 1000, and that is 80. 1 by 80 minus this becomes 1 by 5, 1 by 25. नहीं गड़बड़ किया गया. 20, 10 to 25 by 1000, 14 ना, sorry, तो भी गड़बड़ है. This is 1 by 40. This is 5, and then how much? 25.
ऐसा कैसे हो गया? कैलकुलेशन लेट मी चेक. 0.5. अच्छा ये 2 तो छूट ही गया. हाँ 20 तो 10 नहीं तो छूटा. 40 तो है. दिस इज 0.2 into 20 by 1000 ना. 100 लिखा हुआ है. तो दिस इज minus, this is 50 and 5 250. Okay, now that gives you 210 upon 40 into 250 into 850. This will be the answer. Now if you want to cancel it out, 5 say 5 times 5 say 170. This will be cancelled. देखिए उषा तेरा वाला कैलकुलेशन आ गया. तो 340 plus 70. कैलकुलेशन में नीचे 4 ने 2 आया था. 4 नहीं आया. हाँ सर, वो 1/40 को मैंने 1/20 लिख दिया. निश्चित 100 से ज्यादा परसेंटेज कैसे हो सकता है? So this हाँ is सर. 15/7 तो this is 20 है ना. This is 340 plus 17, 357/20 है ना. So this much is coming how much? 19 तो नहीं आ रहा है. हाँ एग्जैक्टली सर, वो 17 पॉइंट कुछ तो आ रहा है. ठीक है इसको देख लेंगे. So this is the calculation basically है ना. तो 1 and then 15/7 तो 7 point. 17.85. हाँ चलेगा वो. लगता है मैंने जहाँ से उठाया वो उधर. So 17 point and then 85 है ना. 85. यस. Okay. Anyone having any doubt? देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो. एनी डाउट? चलो तो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं अगेन. दिस टाइम यू हैव टू डू इट. अच्छा दूसरा केस नहीं बताया, एक लाइन में जस्ट बता देता हूँ व्हाट इज द सेकंड केस एंड देन विल गो टू दैट होमवर्क. इसमें क्या होगा ना, यू विल बी हैविंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी अर्लियर कि यू विल बी हैविंग 2 सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर विदाउट एनी इनर्ट इम्प्योरिटी, और दोनों जो है ना वो बी से रिएक्ट करेंगे. तो वी कैन हैव ए एंड ए डैश का मिक्सचर, A and A dash का mixture, which will be reacting with B, and the remaining B will be reacting with just sufficient amount of C. So this time, gram equivalents of A plus gram equivalents of A dash plus gram equivalent of C will become the gram equivalent of B, है ना? Because A dash, C तीनों B से react कर रहे हैं. Is it okay? Clear है? We have got just I'll give you example. एक question दिखा देता हूँ so that you can get the format at least. See this question. If I give you this question, बताओ जरा बी क्या है इसमें. मान लीजिए ये केस समझ में आया कि दिस इज फ्रॉम द केस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज द केस जो मैं बात कर रहा हूँ उसका केस क्यों लग रहा है ये? सर ए और ए डैश मिलते हैं ना. तो इनिशियली आई एम हैविंग Cu2s एंड Cus, उसी का मिक्सचर विदाउट एनी इनर्ट इम्प्योरिटी है ना. नाउ दैट इज बीइंग ट्रीटेड विद KMnO4. KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है. नाउ ये क्यों SO2 को हटा दिया? क्योंकि SO2 में इंटरफेयर इन द रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई उसको हटा के, एंड देन it says excess of MnO4 minus is titrated with this thing. So this excess of KMnO4 will oxidize Fe2 plus into Fe3 plus है ना. And that's why we need to understand कि यहाँ पर if I say this is A, this will be A dash, this is B, and this is C. Understood ना? And then we'll write, एक लाइन में इसको लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A plus gram equivalents of A dash plus gram equivalents of C will be equal to gram equivalents of B. Now, if I'm saying A is Cu2s, then this will be Cus, this will be Fe2 plus, and this is KMnO4. इसको डिवाइडेड बाय मत सोचिए, मैंने अंडरलाइन किया है, तो थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ. ओके
चलो इसको ट्राई करके रखोगे. हाँ, कैलकुलेशन मे बी डिफिकल्ट, देन यू कैन यूज द कैलकुलेटर. इफ यू आर गेटिंग दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशन, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर. ठीक है. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन, देन आइडेंटिफाई कौन सा केस है, कैसे ये बैक टाइट्रेशन में आ रहा है. Okay, these are the two questions you have to try, and then next class में mostly I try to finish it, क्योंकि अभी बचा क्या है, आयोडोमेट्रिक. वो हो गया तो आयोडोमेट्रिक एक लाइन की कहानी है, और उसके बाद there is something called back titration. ठीक है. हाँ हर्ष, tell me. Is this case 2? हाँ, this is the क्यों क्यों लग रहा है केस 2 है? Pyrolusite और oxalic acid both are reacting with sulfuric acid, and उसके बाद being left over. Pyrolusite ore was treated with this and some sulfuric acid. Sulfuric acid is just maintaining the medium. And then it says oxalic acid left undecomposed, was raised to this much, and then it was titrated with KMNO. So this is A present with, that means this is A actually present with some impurity, because we know that कि pyrolusite is an ore जिसमें MnO2 रहा होगा और उसके साथ कुछ रहा होगा जिसका कोई रिएक्शन नहीं. So we'll say MnO2 is A present in that pyrolusite along with some impurity. This is B and this is C. So this is case 1 वाला, this is case 2 वाला है, this is case 1. But इसमें थोड़ा सा twist. Have you got that twist? See the second line. The oxalic acid left undecomposed, उसको डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करवाए, इसका 250 ml सॉल्यूशन बना के उसके 25 ml सैंपल को लिया है, and then they have given you the requirement. मतलब actual requirement will be 10 times more than that. Just take care of that, try it, and then I'll give you the answer and the solution. ठीक है, next class. हाँ क्रिश. सर अभी मतलब ऐसे मतलब कैलकुलेशंस तो वगैरह आते ही है ना एग्जाम में. अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल जो ये सारे एग्जाम्स है, इसमें कभी कभी बहुत कचरा कैलकुलेशन आ सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन की फैकल्टी किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन सेट कर रहा है. कभी कभी दे कॉपी पेस्ट इट, तो यू विल बी गेटिंग दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट कि मैं कैलकुलेशन छोड़ता नहीं, है ना. आई ट्राई माय हाँ बेस्ट सर, कि मैं मतलब पूरा फाइनल तक पहुंचूं. आप तो वो कैलकुलेशन हैबिट कर डेवलप. लेते हो. जैसे मतलब अभी 1.434 हो गया और इंटू 1.8, तो मतलब मैं तो छोड़ ही दूंगा ये. नहीं छोड़ने का ना, वही मैं कहा, वो जिद होनी चाहिए. दैट हाँ टाइप ऑफ मतलब थिंग यू शुड हैव, कि वो इंटरेस्ट अपना ही होना चाहिए. कैन आई क्रैक दिट विदाउट यूजिंग पेन, और मिनिमम यूज ऑफ पेन, है ना. तो वो एक हैबिट जब आ जाएगी ना, देन यू विल हाँ स्टार्ट वो एंजॉयिंग मतलब पेन के साथ तो एक बार वो तो हो ही जाएगा पेन के साथ. इट. दैट्स व्हाई आई राइट. एम टेलिंग यू ना, आई वो ऑलवेज अभी एंजॉय मेंटल सॉल्विंग कैलकुलेशन दिस टाइप कैसे ऑफ करना है. कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग पेन. आई एंजॉय हाँ. दैट. दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू दैट. सो आई ऑलवेज फाइंड कि क्या कर सकते हैं इसमें. ठीक है. तो वो अगर हैबिट रहेगी ना, तो फिर ये काम होगा. जैसे अभी नहीं जैसे मतलब लगता वही है ना, वो हैबिट डेवलप कैसे करे वही पूछ रहा हूँ. जैसे देखो ना, देयर वाज अ केस, आई थिंक ये था, एंड मान लो 0.55, हम्म. दिस इज अ कैलकुलेशन. वी नो हाँ. दैट 0.5 का मतलब आधा होता है ना, हाफ होता है. हाँ. तो हाफ ऑफ इट इज 5.6, 5.6. और ये 0.05 इज 1/10 ऑफ 0.5 ना. हाँ. तो दिस विल बी 5.6 का 1/10. अच्छा. That will be 5.6 plus 0.56. Add it, you will get the right answer. तो सही है. 6.6 आ जाएगा. Now, हम्म. अब ये मैंने कोशिश कर करके एक्सप्लोर किया है. हाँ. बट यू शुड हैव दैट, मतलब यू शुड फील दैट एंजॉयमेंट व्हाइल डूइंग इट. अदरवाइज तो लोड दिखेगा कि अरे क्या कैलकुलेशन है. सही है. वो एक चैलेंज की तरह, इंटरेस्ट की तरह लोगे, तो ही ओनली यू विल बी एबल टू डू इट, है ना. नहीं हाँ, क्योंकि वो एफबीएस वगैरह सॉल्व करते हैं ना, हाँ, उसमें तभी तो मिलेगा बहुत काफी सारा. ऐसा कैलकुलेशन आता है.
बहुत सारा तो मिलेगा। सर तो तो बोलते हैं कि तुम कैलकुलेटर ही यूज कर लो, पर हर बार मैं कैलकुलेटर थोड़ा ना यूज जनरली कर मैं सकते हैं। जनरली मना करता हूँ, बहुत लोड आ जाता है एंड इफ आई एम हैविंग दैट हरीनेस की नहीं मेरे को जल्दी खत्म करना, देन ओनली आई विल टेल यू कि कैलकुलेटर यूज कर लो। इफ आई टाइप अ क्वेश्चन तो नॉर्मली आई टेक केयर ऑफ दैट पार्ट की कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देयर आर टू थिंग्स, एक तो तुमको ये आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन, दूसरा एक आइडिया तुमको ऑप्शन से मिले। इफ ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज एंड इफ यू आर हैविंग ऑप्शंस देन हाँ यू सी की राइट ऑर्डर ऑफ ऑप्शन कैसे निकाले, ठीक है ना, एंड दैट मतलब यू वो तो एक बार कर ही सकते हैं, जैसे इसमें अभी ऑप्शन थोड़ा स्पेस्ड आउट हो तो इसको 0.55 को 0.5 यस। लेके कर सकते हैं। हाँ तो वो दिख रहा है कि 5-6 के रेंज में दिखना चाहिए, 5.5 से हाँ। ज्यादा दिखेगा ही, और 6 से के अराउंड दिखना चाहिए। तो एक हम्म। ऑप्शन के मिल जाता है, दैट इज वन चॉइस। दूसरा चॉइस है डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, स्टार्ट डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अभी अच्छा। क्या होता है ना, बहुत बार आ गया ठीक है छोड़ देते हैं, मेरे को हाँ आदत रहती है कि मेरे को आंसर तक पहुंचना है। इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ आग तो तुम कर लीजिए, जी सर। फिर वो बहाना हो जाता है कि अरे कचरा कैलकुलेशन दे दिया क्या करें, है ना। हम्म। चलो फिर क्लोज करते हैं। बैच 1 वालों के लिए आइनिक का मैं 15 मिनट्स में लिंक भेज दूंगा, ठीक है। विल स्टार्ट एट ठीक है 6। सर। सो हाँ जी। तो वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्वेश्चंस आपका मॉड्यूल जो है ना, आप हाँ वो थर्सडे को दे दोगे फिजिकल? आज मेरे पास आने वाला है, उसका सॉफ्ट कॉपी शी प्रॉमिस्ड मी कि आज भेज देगी, ठीक है। तो आ जाता है तो आई फोन, ठीक है। फिजिकल कॉपी नहीं दे रहे हो आप? दूंगा भाई, पहले सॉफ्ट कॉपी आने आने अच्छा तो अच्छा, मेरे हाँ हाथ हाँ में। हाँ। वही नहीं दे रही, 2 दिन से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और चल बाय सर, थैंक यू सर। Bye. बाय सर, थैंक यू।